In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Ameer. I hope that you'll be doing well. आज मैं आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश पार्ट 2 आर पढ़ाने जा रहा हूँ। नंबर 1 सेंटेंस है, उसके मुखालिफ ने उसे अनाड़ी समझा था क्योंकि उसका जिस्म बहुत पतला था। His opponent took him for a novice because his body was very slim. नंबर 2, उसकी बेवकूफ़ी थी कि वो उसको समझ नहीं सका। It was his foolishness that he could not judge him. नंबर 3, वो उसके लिए छुपा रुस्तम साबित हुआ। He proved to be a dark horse for him. नंबर 4, उसने और सारे मुकाबला करने वालों को दायरे से भगा दिया। He made all the other competitors run away from the ring. नंबर 5, उसे कोई नहीं हरा सका। Nobody could beat him. नंबर 6, उसने सब देखने वालों को हैरान कर दिया। He surprised all the spectators. नंबर 7, एक गुस्से वाले मोटे शख्स ने उसे ललकारा। An angry fat person challenged him. नंबर 8, उसने उसे दायरे में आने का इशारा किया। He motioned him to come into the ring. नंबर 9, उसने एक ही चोट से उसको नीचे गिरा दिया। He knocked him down with one blow. नंबर 10, आखिर में उसे इनाम के तौर पर एक तमगा दिया गया। In the end, he was awarded with a trophy. I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video, subscribe my channel, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.